જોઈ રહ્યા છો ધ BR24 ન્યૂઝ. હવે જોઈએ અગત્યના સમાચાર. આઈટીએમ એસએલએસ બરોડા યુનિવર્સિટીમાં 20મી નવેમ્બર 2024 થી 28મી ડિસેમ્બર દરમિયાન ટેરાકોટા સ્કલ્પચર કેમ્પનું આયોજન થયું હતું. આઈટીએમ એસએલએસ બરોડા યુનિવર્સિટીમાં ઝરોદ ખાતે 20મી નવેમ્બર 2024 થી 28મી ડિસેમ્બર દરમિયાન ટેરાકોટા સ્કલ્પચર કેમ્પનું આયોજન થયું હતું. આ ટેરાકોટા સ્કલ્પચર કેમ્પમાં તમિલનાડુના 11 પરંપરાગત માટીના કારીગરો આ કાર્યક્રમમાં ભાગ લીધો, જેની આગેવાનીમાં ઠંગૈયા વેલારે કરી, જેમને ભારત સરકાર દ્વારા રાષ્ટ્રીય પુરસ્કારથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા છે. ભારતના અનેક મ્યુઝિયમો ઉપરાંત આ કલાકારોને જાપાન, ફ્રાન્સ અને કોરિયા સહિત 12 દેશોમાં પોતાની કલાનું પ્રદર્શન કર્યું છે. આ કાર્યક્રમના મુખ્ય અતિથિ પ્રખ્યાત કવિ અને કલા વિમર્શક શ્રી પ્રયાગ શુક્લા રહ્યા હતા, જેઓની હાજરીએ આ કાર્યક્રમને ઉર્જાવાન અને યાદગાર બનાવ્યો. શ્રી પ્રયાગ શુક્લાએ પોતાના પ્રવચન દરમિયાન કહ્યું કે ટેરાકોટા આદર્શ રૂપે મૌન કલાનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે, જેનો દરેક શિલ્પ અને અનોખી વાર્તા કહે છે. કલાકારોએ આ કાર્યક્રમમાં શ્રમ, સમય અને પ્રેરણાને રોકીને કલાનું એક અનોખું મંચ પૂરું પાડ્યું છે. કારીગરોએ 40 દિવસના સમર્પિત પ્રયત્નો પછી આદરણીય તમિલનાડુ દેવતા અય્યનાર અને તેમના દેવી દરબારને દર્શાવતી 37 જટિલ ટેરાકોટા શિલ્પો સફળતાપૂર્વક તૈયાર કરી છે. આ પરંપરાગત માટીના કારીગરો શિલ્પો બનાવવાની વિશિષ્ટ પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરીને બનાવેલ શિલ્પો ધરાવે છે. આ ટેરાકોટા સ્કલ્પચર કેમ્પમાં માટી બનાવવા માટે તળાવની કાળી માટી કે જેમાં દર ન હોય, કાળી માટી જે ખેતરોમાં ભેળવવામાં આવે છે અને લાલ માટીનો તથા ચોખાનો ભૂકો અને લાકડાનો વહેરનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે. આ તમામ મૂર્તિઓ 4 ફૂટથી લઈને 14 ફૂટની છે. ટેરાકોટા શિલ્પ પ્રક્રિયાને અનુસરીને જેમાં માટીની કાળજીપૂર્વક તૈયારી, ઝીણવટભરી વિગતો અને ભઠ્ઠામાં ફાયરિંગનો સમાવેશ થાય છે. આ શિલ્પો તમિલનાડુના સમૃદ્ધ વારસા અને કારીગરીનું ઉત્તમ ઉદાહરણ આપે છે. તમિલનાડુના ગામડાઓના રક્ષક દેવતા ગણાતા અય્યનારના ભક્તો દ્વારા ખૂબ જ આદરણીય છે, જેઓ તેમની ઈચ્છાઓની પરિપૂર્ણતા માટે તેમને પ્રાર્થના અને વિનંતીઓ કરે છે. આ શિલ્પો ટેરાકોટા કલાત્મકતાના કાયમી સાંસ્કૃતિક અને આધ્યાત્મિક મહત્વનો ગહન પ્રમાણપત્ર છે. આઈટીએમ એસએલએસ બરોડા યુનિવર્સિટી આ ઝડપથી આદર્શ થતી કલાને પ્રોત્સાહન આપવા માટે સમર્પિત છે અને સાચવવા કટિબદ્ધ છે. आज यहाँ आकर बहुत प्रसन्न हूँ. ये जो अय्यनार देवी देवताओं की मूर्तियाँ और मूर्ति शिल्प दोनों हैं, मतलब ये स्टैचूज भी हैं और ये स्कल्पचर्स भी हैं. दोनों में भेद होता है ना कि मूर्ति एक अलग चीज़ है, स्कल्पचर एक अलग चीज़ है. वो थोड़ा ज़्यादा इंडिपेंडेंट होता है एक कॉन्सेप्ट से, पर ये कॉन्सेप्ट भी है, पुराना है और नया है, क्योंकि ये इसको नई तरह से बनाया गया है और सदियों से बन रहा है. उस परंपरा को ये लोग जीवित रखे हुए हैं. मैंने बात आज कही यहाँ मंच से कही है कि जैसे हमारे कोणार्क, खजुराहो है, हमको इन मूर्ति शिल्पों को वैसे देखना चाहिए. ये हमारे स्मारक है, इनको लोक कला की तरह मत देखिए, कला की तरह देखिए. और कला की तरह ही आप समकालीन कला को देखिए, आधुनिक कला को देखिए और इनको भी देखिए और एक साथ देखिए, क्योंकि इसमें कहीं कोई फर्क नहीं है. इनकी कलात्मक ऊंचाई उतनी ही बड़ी है. इनकी एक एक मुद्रा आप देखो, वो चाहे जीवों की हो चाहे मनुष्यों की हो, उनकी उपस्थिति देखिए, वो कैसे आपको खुशी से और आनंद से भर देती है. कैमरे में सब आ रहा होगा ना, आप दिखाओगे ना, बस तो दिखाना ही काफी है, उनको देखना ही काफी है. आप देखते रहो. थैंक्स टू ऑल. मेरा नाम तंगैया. आई लर्न only 12th class during 1967. After that, the same time I learned pottery work, clay pottery from my mother. Up to 90, I stay with my family members, prepare only clay pottery. During 1990, from my same district, मेरा मास्टर एम रंगस्वामी वालार से I went to Delhi to prepare Ayyanar, same Ayyanar temple by clay work by Tamil Nadu clay से. After that, so many
places I participate this craft, clay craft, terracotta and pottery, both items with my master, without my master, in India, not only in India but also throughout the world, so many countries. 93 I went to Greece, the Indian food festival through Delhi tourism. 2001 I went to Korea. There, the International Ceramic Festival, so many artists came there. With my brother-in-law Palanichami, I participate this craft. 2002, with my master M. Rangasamy Valar, I went to Taiwan, the Ingo Ceramic Carnival, 1 month program. Then 2008, Japan said 2% came to my home. Already they arranged 1 month program, the International Wood Fire Festival. Already there, they select the Indian Firing Festival. That time, in front of 300 VIPs, we prepare firing festival. Then next day, we open the firing place in front of 20,000 people. So many people like very much this program. Then after 2 months, with my master, I went to Tokyo. Our ambassador arranged 2 month program, the Namaste India 2008. There 2 days exhibition. In that exhibition, 10 lakhs people came there and saw this program. 2010, I went to France, near Eiffel Tower, the Cré Branly Museum. There, How many years you made this? 90s, I prepared like these items. 2018, 34 years हो गए. 2018, with my brother-in-law son went to Malaysia, the pottery workshop. 2019, with my master's Peta, 2% went to Burma, the Indian Culture Center. We prepare lot of items. In India, now, Gwalior में one program, बहुत बड़ा program. Now here 84th program हमको, with me 11 artists आ गए, पूरा relations से. So many thanks to all. मैं ITM-SLS बड़ौदा यूनिवर्सिटी की प्रेसिडेंट हूँ, कनुप्रिया राठौर. हमारी यूनिवर्सिटी अब लगभग 11 सालों से है और यहाँ पर बहुत सारे कोर्सेज हम रन कर रहे हैं. मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, नर्सिंग, आपके कंप्यूटर साइंस रिलेटेड कोर्सेज, पैरामेडिकल कोर्सेज, कम्युनिकेशन एंड डिज़ाइन, ये सारे कोर्सेज यहाँ चल रहे हैं. और इसके अलावा हम एक अभी पिछले साल नया हॉस्पिटल भी खोला है, तो आगे जाके शायद हम मेडिकल लाइन में भी आएंगे. ITM-SLS का शुरुआत से ही कला से बहुत गहरा लगाव है और ये जर्नी यहाँ की नहीं है, ये ग्वालियर से चली आ रही है मेरे साथ. तो जब हम यहाँ स्थापित हुए थे तो पहले वर्ष ही हमने यहाँ एक स्कल्पचर कैंप किया था और उसी के स्वरूप आप देख सकते हैं कि पूरा कैंपस सुसज्जित है पूरे बड़े बड़े स्कल्पचर्स से. मेरा ऐसा मानना है कि किसी भी यूनिवर्सिटी कैंपस में अगर आर्ट नहीं हो तो उसकी सोल नहीं होती है. तो बच्चों को आर्ट जानना चाहिए, भले ही वो उसमें प्रोफेशन ना बनाए अपना, पर आर्ट से उनको रूबरू होना चाहिए. ये उनके जीवन में रस डालती है और उनके जीवन को एक नया आयाम देती है एंजॉय करने का. जो जीवन की बारीकियां हैं वो आर्ट हमें सिखाता है. तो क्लासरूम में तो वो पढ़ते ही हैं टेक्निकल चीजें, पर ये उनके जीवन सुंदर हो, अच्छा हो, विचार अच्छे हो, उसके लिए आर्ट एक कैंपस में होना बहुत जरूरी है. ये जारी रहेगा हमारे लिए ये सफर और हम हर साल इस तरीके के कैंप करते रहेंगे. टेराकोटा की जो कला है, टेराकोटा यानी मिट्टी की पकाई हुई मूर्तियां बनाना, ये जो कला है भारत की सबसे प्राचीन 5000 साल पुरानी एक कला है. और इस कला को अभी जो है ITM यूनिवर्स जो है वो प्रोत्साहित कर रहे हैं अपने सिंपोजियम कैंप के माध्यम से. इस कैंप में यहाँ पर हमने करीब 40 मूर्तियां जो है वो बनाई हैं. आयनार का देवलोक बनाया है. ये जो कला है इसके माध्यम से हम भारतीय प्राचीन शिल्प परंपरा और भारतीय संस्कृति को नई पीढ़ी तक पहुंचाना चाहते
चाहते हैं, क्योंकि जब तक नई पीढ़ी के बच्चे, कॉलेज के बच्चे देखेंगे नहीं कि हमारी परंपराएं क्या हैं, हमारे शिल्प कौशल पुराने समय से क्या है, तब तक वो उसके आगे की कदर कैसे करेंगे। तो शिक्षा के साथ में हाथ के काम की कदर, हुनर की कदर, प्रतिभा की कदर वो जाने, इसके लिए ये इस तरीके के कैंप बहुत ही महत्वपूर्ण है जो ITM ने अपने यहाँ आयोजित किया है। मेरा नाम मुश्ताक खान है। मैं क्राफ्ट म्यूजियम, राष्ट्रीय क्राफ्ट म्यूजियम न्यू दिल्ली का डिप्टी डायरेक्टर रहा 27 साल। उसके पहले मैं भारत भवन में रिसर्चर रहा। मैंने 40 साल से भारतीय लोक और आदिवासी कला के ऊपर शोध कार्य किया है। मेरी 3 पुस्तकें और करीब 300 से ज्यादा आर्टिकल प्रकाशित हैं। लगभग सभी बड़े म्यूजियम्स में मैं लेक्चर करने जाता हूं और इसके ऊपर